audible? Am I audible, dear friends? Yes, you are. Yes, good evening, ma'am. Very You are good. audible. Thank you. गुड इवनिंग मैम। Very good evening, सुषमा जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं मैम। Very good. A very good evening, Divya ji, Zinat ji. Good evening, ma'am. Okay. So today we are going to talk about what we have done for so many days, 28 days. Every day reading a new process, learning a new tool, and of course, empowering ourselves. So before I start, would anybody like to share something about this journey? पहले की तरह मैम मैं तो यही बोलूंगी, मेरा तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू मैम। वेरी गुड। इस लाइन में कुछ आप लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक होइएगा कि क्या आपको लगता है। आप अपने आप को, जैसे ये एक्सरसाइज में हर बार करती हूँ, सब मेरे जब भी अपन पढ़ते हैं, कि जब आपने स्टार्ट किया तब आप अपने आप को 10 में से कितने मार्क्स देते हो, और आज आप जब बुक को एंड कर रहे हो इस जर्नी में, आप अपने आप को 10 में से क्या मार्क्स देते हो? मैम मेरा पहले तो जब स्टार्टिंग था तो मे भी शायद 0 ही था। फिर लास्ट डे में जब पिछला सेशन मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने 7 दिए थे। अभी अगर मुझे नहीं मालूम, अब आज आप दोगे मुझे मार्क्स। देखो क्या होता है, अपन लोग है ना अपने आप को बहुत अच्छे से पहचान रहे होते हैं सुषमा जी। मैं आपको 10 में से 10 दे दूंगी तो भी आपको पता है कि आप किस वक्त कैसा अपना रिस्पॉन्स होता है। मैं रिएक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है। There we are able to assess ourselves. Where am I? मुझे अब कितनी मेहनत करनी है अपने आप पर, कितना मैंने चेंज पा रही हूँ मैं अपने आप पर, राइट? yes. हाँ, चेंज तो बहुत आया है मैम। वेरी गुड, बहुत सारा चेंज आया है, बहुत सारा। वंडरफुल। किस तरह का चेंज पाती हैं आप पहली वाली सुषमा जी में और अब वाली सुषमा जी में? किन दो सेंटेंसेस में सम अप कर सकते हो आप इसको? यस मैम। हाँ, पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था मैम, बहुत गुस्सा आता था, छोटी छोटी बात पे भी गुस्सा आ जाता था। अब गुस्सा नहीं आता। अब पहले मैं ब्लेसिंग जरूर अपने बच्चों को देती, पर स्पेशली जाके ग्रेटिट्यूड करके नहीं देती थी। सबसे बड़ा चेंज ये आया। और आज एक और इंसिडेंट हुआ कि एक आज पिजियन बिल्कुल उड़ नहीं पा रहा था। सुबह हम वॉक के लिए गए तो वो उड़ नहीं पा रहा था। तो मैं वैसे शायद हाथ लगाती ना लगाती, लेकिन ग्रेटिट्यूड क्लास की वजह से मेरे में हिम्मत आ गई और मैंने कहा ये गली के कुत्ते तो इसको खा जाएंगे अगर ये उड़ नहीं पा रहा है। तो मैंने उसको उठा के एक ग्रिल के आगे एक गार्डन सा बना हुआ था, उसको वहां पर छोड़ा। मैं उठा के उसको प्यार करके वहां छोड़ा। शायद ये क्लासेस अटेंड करने से पहले मैं ये हिम्मत नहीं करती थी। ये भी चेंज आया मैम। ये तो टुडे दिस एन इंसिडेंट, टुडेज इंसिडेंट। ओके, वंडरफुल। एम्पैथी, हम लोगों में बहुत एम्पैथी आती है, कंपैशनेट बन जाते हैं। यस, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? How do you sum up this journey of all 28 days? आप इस जर्नी को कहाँ और कैसे सम अप करते हो? 2 sentences में, if anybody would like to try. आपने जब स्टार्ट किया, आप अपने आप को क्या मार्क्स दिए, और अब आज जब हम बुक खत्म कर रहे हैं, देखिए ये नहीं कि यहाँ अपना जर्नी खत्म हो गई। The journey is yet to go on and it will go on. But yes, we have started it, and so now where do we stand? How do we feel? Anybody? मैम मैंने तो मार्किंग का तो पता नहीं, मैंने मार्किंग का तो दिया नहीं था, बट एक चीज है कि मैं मेरा नेगेटिव पैटर्न में आता था मैं, तो उस चीज से मैंने मूव आउट किया। मतलब काफी चीज क्या होती थी कि जैसे कभी मतलब ऑफिस के इसमें से कुछ उन्होंने बोल दिया तो वो चीज बड़ा हैवी फील होता था, उसको लेकर अपन सोचते रहते थे, एक ओवर थिंकिंग में चले जाते थे।
फिर आजकल तो मतलब ऐसे ही थैंक यू बोला तो मतलब हर चीज की वजह होती है, उन्होंने बोल दिया, हमने भी ठीक उसमें जो चीज इम्प्रूवमेंट के लिए उसको ले लिए, बाकी चीज छोड़ दिए। वेरी तो गुड, ये जो नेगेटिव पैटर्न है ना, इस ये सब चीज में मतलब एकदम जो बोझ बन जाता था, वो चीज से हम बाहर आए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। अभी बिफोर वी स्टार्ट फर्दर, अब आप एक चीज देखिएगा, आप लोग आज देखिए, कल देखिए, पहले परसों देखिएगा, जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट सी, आज का ही देखिएगा आप कि आज दिन भर में आपने वर्ड थैंक यू कितनी बार यूज किया था। How many times did you use this word thank you? Hello सुमिता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? 5 मिनट बैठ बेटा। सुमिता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? ओके, तो आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करिए और आप सोचिए कि आज आपने वर्ड थैंक यू कितने बार यूज किया है। ये एक क्वेश्चन। अब आप एक दूसरा क्वेश्चन है कि आपने ये वर्ड थैंक यू विद फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड कितने बार यूज किया। ये हमारे लिए एक्टिविटी, अपने को किसी को नहीं बताना। वी आर ट्राइंग टू असेस आवरसेल्व्स, वी आर ट्राइंग टू असेस आवरसेल्व्स। तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ड थैंक यू मैंने दिन भर में कितनी बार बोला है, और वही वर्ड थैंक यू मैंने विद लॉट ऑफ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड कितनी बार बोला। आस्क योरसेल्फ। आज की बात कर रहे हैं, सिर्फ आज की। तो उस आंसर से अपन को पता चलता है कि अभी मैं कहां और अभी मुझे कितना और क्यों। राइट योर फ्रेंड्स? वंडरफुल। This, please do it and keep it in your mind. What is your answer and how should you proceed? Right? Wonderful. So I'll share the remaining part of the book today. Anybody can would like to read? Help me in reading. कोई पढ़ना चाहेगा? Can I, ma'am? Oh, why not, my dear? Oh. मैं अभी शेयर करती हूँ। We are reading The Magical Future. Why are we talking about future? Because क्योंकि on our thoughts would depend our future. जो हो गया वो तो मैं नहीं चेंज कर सकती हूँ। अब मेरे पास जो आएगा वो चेंज करने की ताकत मेरे पास है। I have that capacity now to change whatever I want. So I will check my thoughts. I'll keep checking my thoughts. What comes in my mind, or because these thoughts will change into things and will change into future. So eventually we are the creators. हम क्या create करना चाहते हैं, अब हमें ये भी पता चल गया। Best part तो ये कि all 28 days के जो 28 tools है आपके पास, I mean every tool helping us to operate in a different circumstance. So now we are so empowered कि हमारी जैसी situation होगी, we can use that tool and change the vibration we are in. To change into, अब आप लोगों को सबको पता है, what are we talking about vibration? What are we talking about energy? We all are energies. We all vibrate at a different energy. So when we vibrate high, we vibrate high and attract higher things. It is very simple. इसका मतलब ये नहीं है कि there would not be any anger, no emotions, things would still come. But you will be a changed person. How? Your reaction will not be there. Your response will be there. जैसे अभी देव सर ने कहा,
तो अब क्या था, वही सिचुएशन थी पहले, सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस थी पहले, बट तब क्या था, रिएक्शन था. अब क्या है, he is responding. So we all learn to respond. Yes, dear. You see this telescope. Through Yes. this telescope, we have to see the magic in our life, in our future. How do we get this magic? Because this is in our hand. We can attract no magic. We can attract all the magic. It is how we respond. Great. Yes, dear. Okay. You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more floors to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there's no end to the magic you can experience like the stars in the universe. It's infinite. Now, if somebody would ask you, आप कितने खुश हो सकते हैं, तो आपकी खुशी का पैमाना हर बार बदलेगा. Right? Every time your level of happiness would be different. Now when you are please unmute yourself. Oh, sorry, please mute yourself. Yeah. So we are the builders of our life. Just now I told you, we have to keep checking our thoughts. Why? Because we have to purposely think of those thoughts, and then those thoughts, they would become things, and those things would be our future. So we are the builder of our future. And after so many days, just now when we are talking about like reading every day, reading every day, reading a different practice, how is our foundation now? You all know by now that it is building muscle. जैसे आप exercise करके अपनी muscle बनाते हैं, this gratitude also is to be done regularly. It is to be done regularly to build the muscle so that you can attract things, so that you can make it as a way of your life. So with these tools, what are we doing? We are doing this building. कौन सी है? ये जो हमारी life है. हम क्या कर रहे हैं? Flaws add कर रहे हैं अपनी life में. मतलब क्या कर रहे हैं हम? We are making our life more meaningful. We are more blissful. We are more calm and peaceful. That is what is adding floors to our building of our life. And we are climbing higher and higher. Means what? When we are into gratitude, we are vibrating higher and higher. Right? So this is, see, gratitude aata kab hai? Jab I am able to notice what is those things for which I am grateful. तो जितना मैं देखूंगी, अब मैं इतने टाइम से इतनी सारी टूल्स के साथ, I am becoming so rich. मुझे पता है कि मुझे किसको कैसे कहाँ मैच करना है और अपनी चीज को ठीक करना है. So अब क्या होगा? My life is getting, how is it getting? जो vibration की बात कर रहे हैं. Of course, I'll be vibrating at a higher, higher level. Why? I'm not complaining. There is less of complaint. It is not that everything would wipe out. Magic पढ़ने के बाद मेरी life बिल्कुल change हो जाएगी. मैं बार-बार ये कह रही हूँ. You know how to deal with things. You know how to vibrate at a higher level. So through this, we can reach a higher level and higher life. And of course, like stars in the universe, infinite. Yes, dear. To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is
generous, and noble, but to live gratitude is to touch heaven. You see, Jonas, we are the, yeah, Janice. Yes, ma'am. Carry on. Sorry. Johannes A. Gretner, 1912 to 1996, professor, theologian, poet. Okay. Now, dear friends, we all live in that time where diplomacy is at its highest. Nobody would deny that. Even when we are not happy with someone, how do we behave? We don't want to show that to that person. But will that help? So when I'm grateful, then I'm courteous. That is very nice. But I am just courteous because I don't want to show my feelings. Whereas inside I'm boiling. Whereas inside I am, hurt and burnt. So therefore, to speak gratitude is courteous means when we will be grateful, our language would always be very different. We are not acting. We are not talking about diplomacy here. We are talking about the change which will happen in our life and pleasant. Why would one be courteous and pleasant when one is grateful? You see, because one becomes compassionate. We increase our capacity to accept things. We increase our capacity to let go things. So, therefore, our language changes. And when we enact gratitude, it is generous and noble. You become empathetic. You want to help others. But to live gratitude is to touch heaven. You see, my dear friends, it is said, heaven and hell is on this earth. There is ऊपर जाके किसी ने नहीं देखा, जो चले गए उन्हें वो वापस नहीं आए बताने के लिए कि ऊपर क्या है, right? तो अभी के लिए तो हम यही मान लें कि heaven and hell यहीं पर ही है. So if we want to touch that heaven, if we want to be in that heaven, we will adapt gratitude as our way of life. We will adopt also and we will adapt also. Yes, dear. The ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it. And the more deeply you feel it, the less time you will need to give to it as a guide. 3 days a week of remember the magic or combining it with 2 other magical practices of your choosing should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to remember the magic on one day, magical relationships on the second, and magic money on the third. So basically, what is she suggesting us? The author, Rhonda. She's suggesting how we can move further from here. Now we have finished with the reading, all the processes. So from here, how do we proceed further so that we maintain that wavelength of gratitude which continues in our life? Not only continues, it gets better and better. So we can choose different tools, different practices, and move ahead. Four days a week of remember the magic or incorporating it with 3 other magical practices of your choosing will maintain your gratitude and accelerate the magic. So basically, what is she saying? She's saying that now it's not that the journey ends here. What is she saying? That see, this is how we can incorporate, or this is how we can plan, that we end up doing
one or the other practice every day. Now you don't have to read the whole book. You don't need to read the whole chapter, whatever is related on that particular day, which we have been doing for so many days. But what we can do now, we know the crux of all the processes, all the practices. So in that case, what we can do, we can plan which one we can do every day, depending on the situation. So that is what she's suggesting, but the practice has to be continued every day. The choice would be ours what to do. Can I start, ma'am? Yeah. 5 days a week of remember the magic or incorporating it with 4 other magical practices of your choosing will dramatically increase your happiness and the magic in every area and circumstance of your life. 6 or 7 days a week of remember the magic or incorporating it with any other magical practices of your choosing, and you will become the true alchemist who can turn everything into gold. Means, see, the point here is when we do it regularly, we become the alchemist. We can change the things for ourselves. We don't need anything else. We have the capacity and the power to change it. Magic practice recommendations to keep the magic continuing in the important areas of your life, like your happiness, health, relationships, career, money, and the material things you own. You could do the specific practices for each area once a week. However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more through an increased practice of gratitude for that area several days a week. If you are unwell, you will want to do the magical practices for your health every day, if not multiple times in a day. Yes. So now you know which practice to perform when. So now, if we all don't have a book, we can buy a book, but there is no need. The PDFs are easily available, and then we can just read it. I remember when we did it for the first time, when I did it for the first time 2 years back, I wrote all the practices which are given at the end. I wrote them up for what is this for, and then practice. What is practice number 1? What is this for? What to do. Number 2, what is this for? What to do. So in this way, we know, depending every day, how are the circumstances, which area of our life requires more gratitude. Even though we are doing gratitude, but then, you will find some areas of our life, the gratitude is much more, and that area of our life is also flourishing. Whereas any one or two or any other area of my life, which is not very good, जो well to do नहीं है, वहां पर मेरी gratitude की ज्यादा जरूरत है, तो हमें पता चल जाता है कौन सा वाला करना है. Like for example, if I'm not well, I can just do magical practices for my health every day. If not multiple times, means the option is open for doing it multiple times in a day also. That is what we can do. The following recommendations will easily guide you towards the magical practices and will have the strongest and fastest effect in that area. Follow the recommendations in the relevant area for 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. Yes, please take care of the time. It is not that once I have done it and then I tell myself, kuch nahi hota hai. That perseverance is to be there. We have to maintain that perseverance, and we have to keep trying it. It will happen for sure. We are not talking about all these things. These are all the things which we can do. Like if we want for health, we have got these options.
If we want for money, these are the options. These are the magical practices which we have learned. If we want about career, these are the magical practices which we can do for the career. If you're talking about our desires, these are the ones which we can do for manifesting our desires. And our magic rock. Yes, my dear. Your magic rock. You can make the magic rock of your daily life by continuing to keep your magic rock by your bedside and using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best thing that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket, and every time you touch it, use it as your reminder to think of something you are grateful for. Yes, just now before I started reading, I asked all of you to just close your eyes and think, how many times did you say thank you, the mere word, and how many times did you say thank you with gratitude? So this magic rock, actually we are so occupied in our life that we tend to forget. So this magic rock is at the bedside. Why do we keep it at our bedside? So that we don't forget that this is the last thing we have to do before we sleep. Not only that, we can keep this magic rock in our pocket. Why? Whenever you happen to touch it. This is an indication to you that you have to scrutinize your day, whatever time it is that. For example, it is 12 o'clock in the afternoon. So I have to scrutinize my time since morning, abhi 12 baje tak, and see what good has happened. Kyun karenge hum ye? You see, my dear, this is how we teach ourselves to notice things in our life, to notice the things which we are grateful for in our life, eventually learning to be in gratitude. You will hear many people saying, I'm a very positive person. आप बहुत सारे लोगों से बोलोगे, अरे thank you तो मैं दिन में 100 बार बोलता हूँ. I keep hearing this from many people. You see, I say thank you 100 times in a day. But the question is not that mere word. That mere word changes to that feeling, which is gratitude. Am I using that? Then I can pat my back. Yes, I've got into it. It is not difficult. It is not impossible. It's just that we have to train ourselves. So how do we train ourselves? By this. If you all remember, I told you, because you see, whenever we are in gratitude, we don't complain. When we don't complain, we appreciate. So what we can do is we can just make one paper band or something and write it, no complaint. You can try till 10 o'clock in the morning. You can try till 12 बजे तक. मैंने उसको बांध के रखा है कि 12 बजे तक तो मुझे किसी चीज की कंप्लेंट करनी नहीं है. क्यों कर रहे हैं हम ये? We teach ourselves how to be in gratitude, how to be grateful. Your magic dust. You can also make the magic dust everyone practice in a part of your daily life other than sprinkling magic dust over the people who serve you. There are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they are in a bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. You can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food and drinks, your computer or your mail before you open them, your wallet, car, your phone before you make a phone call, or over any circumstance that you want to improve. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. आप देखिए माय डियर, ये मैजिक डस्ट क्या है? ये मैजिक डस्ट आपका वो पॉजिटिव वाइब्रेशन है
जो आप लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। अब आप जब मैजिक डस्ट डाल रहे हैं तो आप लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। आप जब मैजिक डस्ट डाल रहे हैं आप लोगों को मतलब आप उनकी अच्छी चीजें देख रहे हैं, आप उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं। सो व्हेन यू आर डूइंग सो मच फॉर अदर्स, देखिए क्या होता है, what this world is a mirror. What you do for others, you would receive it back. When you are blessing others, when you are sending good vibrations, that positive energy to others, what will happen? It will automatically come back to us. So this is a very good practice. Why is she saying that many applications of magic dust are limited only by your imagination? Because we can just do this magic dust for anything under the sun. आप मतलब ऐसा कोई चीज नहीं कि आप बंधे हुए हो कि इसी चीज के लिए कर सकते हो। आप मैजिक डस्ट करके क्या कर रहे हो? आप दूसरे के लिए भलाई सोच रहे हो। तो दूसरे के लिए जब आप करते हो तो आपके लिए वो होता ही होता है, ये तो हम सबको पता है। So this magic dust practice we can do always. The magic never ends. This will always be there. The more you do, the more you see. Yes, dear. I practice gratitude every day of my life, and it's conceivable Conceivable. to me now that I could have lived days, months, and years without practicing gratitude in some way every day. Gratitude has become a part of my personality. It is in my cells and it's a pattern in my subconscious mind. Yeah, that is why you are doing that magic rock practice. So that you make it as a pattern and it gets into your subconscious mind. So when it will get into your subconscious mind, you don't have to make an effort. You would be doing it automatically. तो जब हम जो चीज ज्यादा करने लगते हैं उसके लिए हम सबको पता है, ये चीज जो चीज हम ज्यादा करने लगते हैं उसके लिए हमें कम से कम मेहनत करनी पड़ती है। बार बार वो मेहनत नहीं लगती जो पहली बार लगी थी। सो व्हेन वी विल प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एवरी डे, you will not be able to think how to now not to do it now after some time, because it will be your personality. But if we get caught up in life and forget to practice gratitude over a period of time, the magic will evaporate. I use the magic in my life as my guide to let me know if I am practicing gratitude enough or if I need to practice more. I watch my life carefully and if I find that I am not feeling as happy, I increase my practice of gratitude. If a few little problems start appearing in particular area of my life, immediately I increase the magical practices of gratitude in that area. कितनी simplified life हो गई हमारी। Why? Because we all know that the more is the gratitude, more is the happiness. Because that is the end result of gratitude. So जब मैं बहुत gratitude में हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं कितनी खुश हूँ मुझे तो अपने आप को पता ज्यादा चलेगा ना। बाहर वाला तो देखेगा स्माइल हम डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी करते हैं। बहुत सारी अंदर से हमारी बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, बाहर से किसी को पता भी नहीं चलता व्हाट इज गोइंग ऑन, बट व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड अस वी नो दैट. So when you know that you are very happy, you are elated, you know you are practicing gratitude. That is the sign of it, symbol of it. That is the एक hint मान लीजिए आप. So, and if you're not very happy or some area of your life, you find some teething troubles, obstacles, that is an indication that I have to start practicing. हम जैसे initially बात कर रहे थे, that you have to start doing that, but those magical practices for that particular area of your life. I am not blinded by false appearances anymore. Instead, I look for the goodness to be grateful for in
every circumstance, knowing that it's there. And then, like a puff of smoke, what was unwanted magically disappears. So she is adding one line that if by any chance we can say that अरे यार हमें बिल्कुल time नहीं मिलता है, I am a very busy person, how do I do it, this takes up my time. So if all these said and done, इसका end result क्या होगा? आपने जो इतने दिन तक इतनी अपनी मसल को स्ट्रॉन्ग करा, वो मसल will start becoming weak and weak, and eventually that gratitude will evaporate, fizzle out हो जाएगा लाइफ में से. If we feel, हमको क्या लगता है मैंने तो एक बार पढ़ लिया है, I know what to do, but हम जितना उसको ज्यादा करते हैं, हमको पता है उतनी अच्छे से हम उसको अपनी लाइफ में imbibe करते जाते हैं. I'm sure we all want to learn how to magically disappear those things which we don't want with puff of smoke. Yes, dear. I started out giving thanks for small things, and the more thankful I became, the more my bounty increased. That's because what you focus on expands, and when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationships, even money flowed by way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. Yes, that means now I cannot say that, उसकी life ज़्यादा set है. मेरी life में बहुत challenges है. सबके पास challenges है. How do I look at it? So when I am grateful, my bounty increased means what? The things which were there in my life, those good things, they also increased. Why? Because wherever there is your focus is, your energy would go. Wherever your energy would go, you would manifest more, whether it is good or whether it is bad. As you all know, never forget, my dear friends, universe doesn't know what is good or what is bad. What are your words? They are very powerful. Our words are very powerful. For example, just as a teacher, for example, I keep saying, mere bacche to padhte hi nahi, they don't understand anything. Now, when I am saying this, no matter how much heart and soul I'm putting in my job, or I'm putting in teaching those kids, what energy am I transmitting to them? That energy would come back to me. And that energy would, when it would come back to me, what will it bring? I am complaining. So naturally, I should be ready for more complaints. Then I should not crib, because I am the one who's calling them. This is what happens in our life. So if we want opportunities, if we want good relationships, if we want money to flow, we have to be grateful. सिर्फ बोलने से नहीं होगा, अपने को फील करना है साहब. क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को हम अंदर से दिखते हैं. हमारे थॉट्स भी उसको दिख जाते हैं. हमारे बाजू वाले को दिखे ना दिखे, doesn't matter. We cannot hide it from the universe. So we have to see that we are not faking it. Yes, you can fake it till you make it, means learn to be grateful till you make it. उसके लिए राजी है. But eventually you have to learn it. Yes, dear. Through the practice of gratitude, you are using an infallible law of universe. It is a gift from the universe to you, and it exists in order for you to use it and advance your life. As I told you, what did the picture depict? The picture depicted that magic is always there. If I'm not doing it, I'll see the rough patch. I'll see that darkness. If I'm doing it, I'll see that all brightness. So it is the law of universe which will not fail us. If we are doing it, it will not fail us. It is a gift which is always for us from the universe, for us to change and advance in our life. The universe and you, there is a level that you can reach with gratitude that causes unlimited abundance in your life. The way that this level of gratitude is reached is through your relationship with the universe, or if you prefer,
spirit or God. You can tend to think of the universe as separate from you, and when you think of it, look up above yourself and towards the sky. While the universe most certainly is above you, it is also below you, and behind you, and beside you. And it is within every single thing and every single person. That means the universe is within within. you. We all know that वो ऊपर वाला भगवान जो है वो हमारे अंदर है. हम इस वाक्य को, इस सेंटेंस को पढ़ते हुए बहुत बार बड़े हो गए, right? So this is the crux of the story. Yes, dear. As below, so above, and as above, so below. With this knowledge alone, you may work miracles. The Amrit tablet. जाने दो मैम, आगे पढ़िए. Okay. When you understand that the universe is within you, and by its very nature, it is for you, wanting you to have more life, more health, more love, more beauty, and more of everything you want, then you will feel genuine gratitude to the universe for everything you receive in your life, and you will have established a personal relationship between you and the universe. Yes, your universe would become your manager. Tell your manager and your work would be done. The universe is genuinely there. It feels the gratitude, right? And then it will give us, we will receive whatever we want in our life, whatever we are asking for, whatever we are vying for. The more genuine gratitude you feel towards the universe for everything you receive, the closer your relationship becomes with the universe, and that is when you can reach the level of unlimited abundance from the magic of gratitude. See, my dear friends, जब आप gratitude start करते हैं, आज अपन ने जब gratitude start किया, हम में से कुछ लोगों ने इसी बुक के साथ start किया. अब जब मैंने वो gratitude start किया है, और आते 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 जब वो बहुत strong हो जाएगा, और जितना genuine my gratitude will be, the universe would give me that abundance. And then I can reach to that unlimited. When my gratitude becomes genuine, more genuine, और वो वक्त के साथ होता चला जाएगा. देखो dear friends, अभी हम क्या बोलते हैं कि आप 10 blessings लिखो रोज, बट एक स्टेज आएगी जब आप इतना ज्यादा करने लगोगे कि जब दिन भर में आपका मन आपको बोलेगा, अरे I'm so grateful यार, ये चीज हो गई मेरे साथ. And we learn to notice very small things, very simple things, and we'll be surprised, you'll be surprised कि यार ये तो मैं पहले कभी सोचती नहीं थी. So we end up not only writing, we end up saying, thanking universe for so many things. So what would happen? What would happen to our gratitude? It will become more strong. It will become stronger. It will become genuine. And then what can stop you from attracting that unlimited? Nobody. You will have opened your heart and mind completely to the magic of gratitude, and with it, you will touch the lives of everyone you come into contact with. You will become a friend of the universe. You will become a channel for unlimited blessings on earth. When you get up close and personal with the universe, when you feel that closeness of the universe within you, from that moment on, the world will belong to you, and there will be nothing that you cannot be, have, or do. You see, आप मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि वो जो हायर एनर्जी है, जिसको हम भगवान कहते हैं, वो हायर एनर्जी हमारा भला करने के लिए ही है? आप में से कितने लोग सोचते हैं ऐसा? प्लीज पुट इन चैट.
how many of you think कि जो वो एनर्जी है ऊपर जिसको हम भगवान कहते हैं, कितने यस मैम, लोग हम सोचते हैं कि वो हमारा भला करने के लिए ही है, हमारा बुरा करने के लिए नहीं बैठा है. वेरी गुड दिव्या जी, सत्येन जी, उमेश जी, वंडरफुल. मधु जी, थैंक यू. वेरी ट्रू. So when that higher energy is there to help us, that means भगवान क्या काम करता है? भगवान ये काम करता है कि वो हम सब के लिए अच्छा चाहता है. अब जब आप ग्रेटिट्यूड को इतना क्लोजली इम्बाइब कर देते हैं अपनी लाइफ में, when you are so grateful, you become unlimited blessing on this earth. Means what? आप मैजिक डस्ट करेंगे, आपके साथ लोग बैठना चाहेंगे. wherever you will go, they feel कि मुझे इसके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे इनके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है. वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि there are blessings oozing out from your body because of your higher vibrations. इसलिए क्या हो रहा है? When you are blessing others, when you're doing so much for others, क्या आप उस higher energy के काम में मदद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Yes, you are contributing in what is God is doing for us. हम उसके काम में मदद कर रहे हैं. So, and then we are becoming blessing on this earth. Who would not want us? Then we are so very close with that universe, and nobody can stop us from getting whatever we want. That is for sure, dear friends. Whether some of us believe it or we don't want to believe it, it is our choice. But मुझे लगता है believe करके एक बार देख लीजिए, करके देख लीजिए. जो साल, इतने सालों तक यदि मैं इस रोड पे चली और उस रोड पे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरी जिंदगी में, लेट मी ट्राई, थोड़ा सा टर्न करके देखती हूँ, अब इस रोड पे चल के देखती हूँ क्या क्या चेंजेस है. ट्राई एंड देन सी. Yes, dear. Gratitude is the answer. Gratitude is the cure for broken or difficult relationship, for lack of health or money, and the unhappiness. Gratitude eliminates fear, worry, grief, and depression, and brings happiness, clarity, patience, Anjali? kindness, compassion, understanding, and peace of mind. Gratitude brings solutions to problems and the opportunities, and where with all to realize your dreams. My dear friends, just read this. ठंडे दिमाग से पढ़िए इसको अपने आप. अब इतना कुछ यदि एक ग्रैटिट्यूड करता है, बचा क्या? कुछ बचा क्या? Life is set, everything is good, going to be. तो थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड करके, क्योंकि आपको दिन भर में तो जब आप थोड़ा थोड़ा करके आ जाओगे तो we know how to move ahead. So when we will do it, we are eliminating so many things, we are getting so many things: happiness, clarity, patience, kindness, compassion, understanding, peace of mind. कितने लोग हिमालय पे जाके बैठते हैं peace of mind के लिए? मुझे वो घर में मिल जाएगा. Just gratitude को imbibe करिए. Gratitude brings solution, opportunities, realization, manifestation of our dreams. भाई ये तो मैजिक वॉन्ड है ना, जो चाहिए उस तरफ करो और ये हो रहा है. किसको नहीं चाहिए हम में से यहाँ बैठे? सबको चाहिए. ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा. Gratitude is behind every success, and it opened the door to new ideas and discoveries. As the great scientists Newton and Einstein proved, Einstein. sorry, ma'am. It's okay, Uh, please don't say sorry. Imagine if every scientist followed in their footsteps, the world would be propelled into new territories of understanding, growth, and advancement. Current, current limits would be broken, and life alerting discoveries would be made in technology, physics, medicine, psychology, astronomy, and every scientific field. आप इसका क्रक्स समझिए माय डियर फ्रेंड्स. हम लोग अभी 19 लोग जो यहाँ पर इसको सुन रहे हैं,
जहां पर भी हम सब है, we are in different areas of life. We all work in a different segment of life. Now, if we all become so very grateful, what would be our life? What would be our surroundings? What kind of things would happen? So when Einstein and Newton, so many years back, and we're still talking about them, what kind of scientists they eventually became? They were very different people which are known right now. Do you think so? There is dearth of scientists. कुछ कमी है साइंटिस्ट की इस दुनिया में? कितने साइंटिस्ट को हम अभी तक याद करते हैं? इनको अच्छा ऐसा नहीं कि जो दूसरे साइंटिस्ट है उन्होंने कोई कम इंपॉर्टेंट काम किया है, सबने अपने फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया होगा, हम इनको ही ज्यादा याद क्यों करते हैं? इनके साथ एसोसिएटेड है ग्रैटिट्यूड। सो यदि आप सोचिए, हम सब लोग एक मिनट के लिए मान लो कि हम सब साइंटिस्ट हैं और जिस जिस एरिया में हमारी डिस्कवरीज चल रही हैं, हम जहां जहां पर भी हैं वहां पर भी हम ये सब चीजें फैलाएंगे। What kind of world are we building? Again, are we not helping in contribution of what God is doing? Those discoveries, यदि अच्छा इसके अलावा जो लोग अभी भी सब चीजें करते हैं वो सब भी ग्रेटिट्यूड के साथ कर लेंगे, हाउ वुड द वर्ल्ड बी? यूक्रेन सोच में पड़ जाएगा, रशिया सोचने में पड़ जाएगा। मैं आज एक वीडियो देख रही थी, मुझे उस वीडियो में मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान के दर्शन और क्या होते होंगे। क्या था वीडियो? पहले मैंने सोचा अपने ग्रुप में डालती हूँ। अब उस ग्रुप में उसमें वीडियो में क्या था, एक शार्क एक बड़े से टर्टल को मुंह में दबा के भागे चली जा रही है। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको खाएगी, बट वो भागी जा रही है और वो कहाँ पहुंच रही है? वो पहुंच रही है एक नाव पे, एक नाव जा रही है और उस नाव के आगे उस टर्टल को वो आगे करे जा रही है। तो जब वो जो उस नाव के ऊपर लोग बैठे थे उनको लगा कि ये एक इंडिकेशन है कुछ प्रॉब्लम है। उस टर्टल को जो कितना हैवी था उसको उन्होंने नाव में डाला। अब आप बताइए, उसको जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि जो टर्टल की गर्दन है उस गर्दन में क्या फंसा था? एक प्लास्टिक की रोप। उस प्लास्टिक की रोप की वजह से वो बहुत सफोकेटिंग फील कर रहा था। अब ये चीज उस शार्क को दिखी, उसने उसको दबा के उसको लगा कि मैं इसको कहीं सेफ पहुंचाऊं। अब वो एक जानवर इतना अच्छा सोच सकता है, हम कहां पर हैं? वो रोप हम में से किसी ने डाली है ना। तो हम ऐसी कितनी सारी चीजें करते हैं, हम यानी ह्यूमन बीइंग्स। तो अब आप देखिए, जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे लग रहा था कि भगवान यही तो है, और कौन सा भगवान है? So my dear friends, if gratitude will become mandatory subject in schools, आज आप देखिए हमारी एक बात होती है कि बच्चे सुनते नहीं है। आजकल के बच्चे, आजकल की ऐसी है, जनरेशन ऐसी है। मान लिया थिंग्स आर डिफरेंट, बट हम हमारे बच्चों को, हम स्कूल से सब एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है करना भी चाहिए, पर जब तक स्कूल से नहीं हुआ है क्या हम हमारे बच्चों के साथ ये स्टार्ट नहीं कर सकते? आस्क योरसेल्फ। हम ये सोचते हैं कि स्कूल उनको सब कुछ सिखा दे, सिखाता है, बहुत कुछ सिखाएगा, करना भी चाहिए, बट शुड वी वेट फॉर द स्कूल्स और शुड वी स्टार्ट डूइंग थिंग्स एट होम? कुछ मत करिए, एक अच्छा सा गिफ्ट रैप किया हुआ डब्बा रखिए अपने एंट्रेंस के बाजू में, जहां या अपनी फ्रिज के बाजू में या अपनी सेंटर टेबल के बाजू में या अपनी डाइनिंग टेबल के बाजू में, उसके ऊपर लिखिए ग्रैटिट्यूड और अपने बच्चों से कहिए इसमें रोज 2 ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं आपको। एट द एंड ऑफ द मंथ आप बैठिए फैमिली के साथ, खोलिए उसको, पढ़िए। सिर्फ बच्चे नहीं करेंगे, सब लोग करेंगे उसमें। व्हाई? बिकॉज अपने को रोल मॉडल बनना पड़ता है बच्चे को सिखाने के लिए। यदि मेरा मोबाइल बच रहा है और मैंने मेरे बच्चे से कहा कि बेटा अंकल से बोलो मैं नहा रहा हूं, मैंने वो सिखाया उसको। और यदि मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ और यदि मेरा बच्चा वो देख रहा है और उसको भी करना है, तो मैं उसको कुछ वो भी सिखाया। अब आप वो करिए
और एट द एंड ऑफ द मंथ आप बैठिए और उसको पढ़िए. सब लोग लिख रहे हैं. You will see a very different bond in the family. Not only this, our children would be very different. आज इस एज में हम सब लोग ग्रेटिट्यूड को पढ़ के गुज़बम्स हो रहे हैं हम सबको. We are so, the word I should say कि we are so mesmerized कि ऐसा भी होता है. तो उस एज में जब हम बच्चे को दे देंगे, मैं हमेशा कहती हूँ आप लाखों करोड़ों मत दीजिए, आप ग्रेटिट्यूड से भरी लाइफ जीना सिखा दीजिए. आप बच्चे को वो खुद मैनिफेस्ट कर लेगा और खुद अट्रैक्ट कर लेगा. हमें इसको कुछ देने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So if it becomes mandatory in schools, we will see that the generation would change and the discoveries would change and the world would be a very peaceful place. Yes, dear. The nations who will lead the world in the future are the ones whose leaders and people are the most grateful. The gratitude of a nation's 1 minute, ma'am. The nations who will lead the world in the future are the ones whose leaders and people are the most grateful. The gratitude of a nation's people would cause their country to thrive and become rich, would cause illness and disease to drastically drop businesses and production to escalate, and happiness and peace to sweep the nation. Poverty would disappear and there would not be a single person in hunger because a grateful nation could never allow it to exist. Yes. आप देखिए इतना कंटेजियस है ये ग्रैटिट्यूड, इतना कंटेजियस है. The more people who discover gratitude's magical power, the faster it will sweep the world and cause a gratitude revolution. This is the last portion. Take the magic with you. Take gratitude with you wherever you go. Saturate the magic of gratitude into your passion, encounters, action, and life situations to make all your dreams come true. In the future, if life presents you with a challenging situation that you think you have no control over and you are at a loss as to what to do, instead of worry or fear, turn to the magic of gratitude and be grateful for everything else in your life. When you deliberately thank the goodness in your life, the circumstances around the challenging situation will magically change. We showed him that is man the way whether he he be grateful or ungrateful rests on his will. कुरान लिखता है ये that a man is showed to be grateful. I mean, man has been showed the way. अब उसको पता है gratitude एक ऐसी चीज है जिससे मैं बहुत कुछ बदल सकता हूँ. Everything can magically be changed. Now again, it is the choice, our choice. मेरी willingness पे depend करता है कि मैं इसको करना चाहती हूँ कि मैं इसको नहीं करना चाहती हूँ. क्या मैं चाहती हूँ मैं दूसरों पे से कंप्लेन कर लूं या मैं चाहती हूँ मैं दूसरों का अप्रिशिएट कर लूं. दिस एंटायरली इज डिपेंडेंट ऑन मी. मैं क्या चूज करती हूँ. मुझे रास्ता बता दिया गया है. हमें हम सबको पता होता है हर सिचुएशन में दो चॉइसेस है. मैंने कौन सी चॉइस करनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है रिजल्ट. हाँ जी. Say the magic words thank you. Say them out loud. Shout them from the rooftops.
Whisper them to yourself, say them in your mind, or feel them in your heart. But wherever you go from this day forward, take gratitude and its magical power with you to have a magical life filled with abundance and happiness. The answer is on your lips, it is inside your heart, and it is ready and waiting for you to bring forth the magic. यही वाली बात है कि आप दरवाजा खोलो, बाहर खड़ा है, बट मैं दरवाजा तो मुझे खोलना पड़ेगा for that abundance, for that happiness, for that well-being, and the magic I want in my life. Rhonda Byrne. Beautiful. We are indeed so grateful to her. We are so grateful to her for making it so simplified and changing, helping us how to change our lives. Isn't it, dear friends? Yes. Anybody would like to say something about it? Ma'am, right. Sorry. Yes, sir. Vishal, sir. Yes, ma'am, you are right. Yes, sir. मैम इसमें एक सिचुएशन बताइए जिसमें मतलब अगर हम कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में हो और हम अगर उसमें ग्रेटिट्यूड करें तो वो सिचुएशन अकॉर्डिंगली हमारे मतलब हमको चेंज हो जाएगी और सॉल्यूशन मिल जाएगा उसमें। तो मतलब अगर हम बड़े से बड़े काम कर सकते हैं इसका मतलब। हाँ सर, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको सत्येन सर। जी। आपकी एक सर फॉर एग्जाम्पल एक कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील होने वाली थी या एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था जिसका आउटकम आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक सर। अब वो जो आप सोच के गए थे वो उस तरीके से तो ना हुई, ठीक है, बट अब आपने इसमें क्या सीखा है कि whatever is going on, I have to look for the whatever is positive or the I'm grateful. मतलब हर सिचुएशन में there is always something to be grateful for, right? तो जब आप अब जब तक नहीं हुई थी चीज तो मेरा माइंडसेट कैसा है, फिर जब मैंने देख लिया कि यार इससे ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छा रहा, हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है। वो चीज भले ना हुई थी बट हमारा नजरिया बदल जाता है सर। सो आप जो कह रहे हैं जो मैं समझ पा रही हूँ, मैं उसके लिए जवाब दे दूं आपको। मतलब हमारा माइंडसेट पे डिपेंड करता है, अगर हम उसे चेंज करें तो हम सिचुएशन कोई भी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। हाँ सर, चॉइस वही वाली बात है। आपका बच्चा लेट आया है, फॉर एग्जाम्पल वो क्लास में से लेट आ रहा है, अब आपके ऊपर है, आप उस वक्त रिस्पॉन्ड करते हैं कि आप रिएक्ट करते हैं। आप बुरी तरह से रिएक्ट करेंगे तो वो बच्चा अपने कमरे में धड़ाम से जाएगा, अपना कमरा बंद करके बैठ जाएगा। यही आप उससे प्यार से बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिचुएशन हुई क्या थी। अभी तो मुझे पता नहीं ना सिचुएशन क्या हुई थी, मैं तो रिएक्ट कर रही हूँ। कहाँ रह गया था, अभी तक स्कूल से छुट्टी हो गई थी, अभी तक नहीं आया। व्हाट इज ब्ला 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 ब्ला। मेरा अब उससे रिएक्शन क्या होगा, मेरा रिएक्शन से उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। तो मेरे कहने का मतलब है हर सिचुएशन में हमारे पास दो चॉइसेस रहती है। अब हमारी विलिंगनेस है मुझे, तो इसमें क्या बोलती है रोंडा कि आप जब ग्रैटिट्यूड करने लगते हो तो आप हमेशा वो वाला चॉइस करोगे, बिकॉज नाउ यू नो हाउ टू टैकल एंड डील योर लाइफ, हाउ टू डील विद इट। अच्छा मैम, थैंक यू मैम। मतलब अंदर से जो हम जैसा सोच के देंगे उसको वैसे रिटर्न में उससे ज्यादा आएगा। हाँ बिल्कुल सर, अंदर की सोच बदलनी है भैया जी। हम जो भी डाउटफुल हो जाते हैं बहुत सी बार लगता है कि ये ऐसा नहीं अरे होगा। साहब अभी मैंने आपसे एक बार याद होगा, मैंने आप सबसे एक सिचुएशन कही थी कि भगवान जी ने आपसे कहा है, भगवान जी ने आपसे कहा है कि आप सोच के रखना कि मैं आपको हर महीने की पहली तारीख को 10 लाख रुपए देने वाला हूँ। अब किसी बंदे ने तो सोच लिया कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, दूसरे महीने में ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बट सपोज मैंने सोचा 10 लाख आएंगे कहाँ से, फालतू बात है, वही स्टॉप कर दिया ना मैंने अपने आप के ऊपर ही डाउट कर लिया, हो ही नहीं सकता। करेक्ट करेक्ट।
Yes, my dear friends. कुछ शेयरिंग, कुछ कहना चाहेंगे? ये बुक में, ये जर्नी में आपके लिए क्या अच्छा हुआ? एक बहुत अच्छा चेंज महसूस हुआ हमें। सॉरी सर? बहुत अच्छा चेंज महसूस हो रहा है मतलब। वंडरफुल, वंडरफुल सर, कीप इट अप। थैंक यू। हाँ सरिता जी, आप कुछ कह रहे थे? Hi, Ruchi ma'am. How are you? I'm good, very good. After a long time. Yeah. Actually, मेरे को एक पूछना था. हाँ जी. Like we believe in God, even I believe, and we do good things, right, to others. हम सारी चीजें अच्छी करती है, सबके साथ सब अच्छा करते हैं. We think good also. But sometimes कैसे होता है कि people सिर्फ उनके नीड्स तक रहते हैं, they take it for granted. And जब उनका खत्म हो जाता है तो they change. तो उस केस में हम क्या रिएक्ट करें, कैसे बिहेव करें कि व्हाई इट हैपेंस विद अस ओनली, बिकॉज़ हम तो अच्छा ही कर रहे हैं. देखिए साहब, अभी मैं आपको सरिता जी की एग्जाम्पल देने के लिए मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ. मैंने ये बुक रीड करी, राइट? मैंने ये बुक रीड करी, मेरे पास 2 ऑप्शंस थे. मैं इस बुक की रीडिंग के साथ कुछ पैसे लिंक करती और मैं वो पैसे कमाती. एक बुक मैंने इसको वॉलंटियर कराई कि नहीं, मेरी जिंदगी इससे बहुत बदल रही, लेट मी हेल्प, किसी और की भी शायद बहुत कुछ बदल जाए. दोनों चीजों में क्या फर्क है? एक करी तो मैंने, दोनों में भलाई है ना. बुक तो बहुत ही अच्छी है. जो अभी मैं बात कर रही हूँ, पैसे लेके भी वही बात करती, और अभी जब मैं वॉलंटियर कर रही हूँ तो भी मैं वही बात कर रही हूँ. बात करने में तो फर्क नहीं है ना. सिचुएशन में क्या फर्क है सरिता जी? कोई भी जवाब दे सकता है, नॉट ओनली सरिता जी. बोलिए ना. दोनों तो सेम ही है. वी आर डूइंग द सेम थिंग फॉर द बोथ ऑफ द बुक. वही तो बहुत बड़ा घाटा है ये तो. मैम पर्पस थोड़ा एलैबोरेट करिए सर. मतलब बेसिकली आप किस इंटेंशन से वो उसको कर रही हैं? भाई आप आप इसको जब ऐसे, हाँ बोलिए. आप जब फ्री में कर रही हैं तो उस पे आपका मतलब अंदर का जो भाव है देने का, आप उसमें क्या देना चाह रही हैं, और जब आप पैसे ले रही हैं तो तब उसमें क्या भाव आ रहे हैं? अभी सर आप 1 मिनट के लिए सोचिए देव सर, आप ये बुक पढ़ रहे हैं, यही बुक आप पढ़ रहे हैं. अब आप जब पैसे लेके बात करेंगे तो आपके क्या विचार बदल के आएंगे? कोई दूसरा दिमाग सोच रहा होगा. और बगैर पैसे आप लेंगे तो क्या आपका दूसरा दिमाग सोचेगा? देव सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा. फिर भी मतलब जो आपके उद्गार आएंगे, जो आप बोलना चाहेंगे, दोनों सिचुएशन में सेम होंगे कि नहीं होंगे? क्या सोचते हैं आप? सेम होंगे, राइट? अब जब मैं आपसे पैसे ले रही थी तो मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन थी कि मैं ये कर रही हूँ, आप मुझे पैसे दीजिए. एक्सपेक्टेशन है. और जब मैं आपके साथ बुक पढ़ रही हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि इसमें मेरा भी तो कितना भला है, आई एम ऑल्सो डूइंग एवरीथिंग अगेन. यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है. तो सरिता जी, आपके क्वेश्चन का है, जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, पहले तो ये इंटेंशन की देखो मैं उसके लिए अच्छा कर रही हूँ. क्या कह रहे हैं आप? जब अच्छा कर रहे हैं तो आप उससे एक्सपेक्टेशन ही मत रखिए ना. क्यों? वो ये करेगा तो मैं उसके लिए करूंगी. अगेन, जैसे मैंने उस दिन कहा था, हमारा एक बेसिक नेचर होना चाहिए, एक बेसिक आइडेंटिटी होना चाहिए. मतलब देव सर मेरे साथ अच्छा चलते तो मैं तो अच्छा चलूंगी, हरीश सर मेरे साथ अच्छा नहीं चलते तो मैं अच्छा नहीं चलूंगी. तो मैंने उस दिन भी ये पूछा था कि मैं इंसान हूं कि मैं गिरगिट हूं, कि मैं पेड़ देख के रंग बदलूंगी. तो फिर मेरा बेसिक नेचर कहाँ है? मेरी आइडेंटिटी कहाँ है? मेरी अपने आप के साथ सच्चाई कहाँ है? तो जब भी मैं देखती हूँ कि यार मैं तो उसके साथ इतना करा है, उसने मेरे साथ कुछ नहीं करा है, तो यानी जो भी मैंने कराया है, मैंने सोच के एक तो अपनी बहुत सुपीरियरिटी कि मैंने उसके साथ करा है, वो नहीं कर रहा है. देखिए साहब, ये जो वर्ल्ड है ये मिरर है. आपने जब भी किसी के साथ छोटी सी चीज करी होगी, वो आपके लिए 4 टाइम्स 5 टाइम्स मैनी फोल्ड होके आएगी. पर कहाँ से आएगी आपको नहीं पता. और हम कहाँ फंस जाते हैं? मैंने जीनत के साथ ऐसा किया था, जीनत ने मेरे साथ नहीं किया, बट उसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया.
जीनत ने तो मेरी मदद नहीं करी थी, पर सत्येंद्र सर ने मेरी बहुत मदद करी थी। तो आपको मिला ना, वो कहाँ से आ रहा है? We should not get into that. How is universe going to help us? We should not get into that. How में तो जाने ही नहीं। So जब आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, आप किसी को blessings दे रहे हैं, आप किसी के लिए मदद कर रहे हैं, you are more capable. एक सिंपल सी चीज मैंने सीखी थी, यदि आप बहुत अच्छा करते हैं और यदि सामने कोई ऐसा है जिसने अच्छा नहीं किया, तो आपकी अच्छाई दिखी इसीलिए रही है कि उस अगले ने अच्छा नहीं किया। अभी आप सोचिए, हम 19 लोग एक जैसा करते तो हम 19 में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तो मुझे अच्छा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जगह ही नहीं दिख रही है। ऐसे ही एक सिंपल एग्जाम्पल है, आज आपके घर में बाई आती है। आपके घर में जब बाई आती है, आपके घर में एक बच्चा हुआ रात वाला, यदि वो ना खाए तो आप मुझे बताइए आप उसका क्या करेंगे? अब इसको आप ऐसा सोचिए, आपका मन हुआ आज मेरा बर्थडे है, चलो कुछ दान करता हूँ या दान करती हूँ। अब कोई लेने वाला ही नहीं है, सब पैसे वाले हैं, तो आपसे दान कौन लेगा? तो शुक्र है उस बंदे का जो आपसे दान ले रहा है और आपको ये प्रिविलेज मिल रहा है कि आपने किसी के लिए कुछ किया। So we should be grateful to that person. Because of that person, I can do something. जबकि होता उल्टा है, मैंने उसके लिए किया। अरे साहब, जब उसको लेना नहीं होगा तो फिर आप किसको दोगे? कितनी भी ग्रेटिट्यूड की बात कर लो, आप जब करोगे किसी के लिए, when you do it for others, you get it more. ग्रेटिट्यूड आ कहां से रहा है? When you are noticing what is, तो पहले आपको ये करना पड़ता है। When you notice. Getting my point, my dear? Yes, yes. Wonderful. Thank Said you. very nicely. Thank you, my dear. Thank you, मिस thank you. इसमें समरी नटशेल में नेकी कर दरिया में डाल। नहीं सर, It ये means ना, नेकी दरिया में मत expect- डाल, नेकी नहीं, कर नहीं। भगवान के चरणों में डाल। हाँ, मतलब ये एक का मुहावरा है। हाँ, मुहावरा है। इट मीन्स बेसिकली डू हाँ। नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। Yes. आप कंटिन्यू करो अपना अच्छा काम करते, हाँ। तो करते रहो। हाँ। सेकेंडली 90s में सीखा था हाँ। कि यू लव एवरीबडी, हम्म, but love opposite person may not love you. हाँ। Means love may come to you from different source. Yes. Source may not be same. Yes. तो आप अगर लव करते हो तो लव आपके पास आएगा, not necessary from the same source. It may be Yes. different source. ये सीखा था एक योगा में। तो do good thing आपके पास आएगी, Yes. not necessary from the same source. Yes. जैसे फॉर एग्जाम्पल रामायण में भी कहा है कि हाँ। राम ने तो भगवान थे, चाहते तो 2 मिनट में सीता को छुड़ा लेते, लेकिन ही वांटेड टू सेट एन एग्जाम्पल। Yes. एंड कई के बेस पे स्टेटमेंट पे कि 14 साल का वनवास, थोड़ा माइथोलॉजिकल जा रहा हूं, तो उसका मतलब ये था कि रावण की उम्र अभी 14 साल है। फ्रॉम दैट डे, दैट टाइम ऑफ कई सेड एंड ही प्रोसीडेड टू वनवास। तो उस टाइम से लेके वनवास खत्म होने तक रावण की उम्र अभी 14 साल ही बची है। तो वो चाहते तो 1 मिनट में कर सकते थे, लेकिन ही सेट एन एग्जाम्पल कि मुझे भी हेल्प की जरूरत है। मैंने इंसानों की नहीं, बंदर की हेल्प ली। तो कौन किसको कब किस वक्त काम आ जाता है, इन व्हाट फॉर्म वी डोंट नो। एज आपने शार्क का एग्जाम्पल दिया, दे वेर बिलोंगिंग टू द सेम फर्टिनिटी। तो ये तो ह्यूमन टू एनिमल हो गया। स्टिल वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट थिंग और अंडरस्टैंडिंग कि कहां से क्या आएगा, वी डोंट नो। यू डू योर जॉब, Yes. यू डू योर ड्यूटी एट एनी कॉस्ट। आप अपना करते रहो। Very true, sir. Very true. Thank you, mate, sir. थैंक यू मिस। कुछ और बोलना चाहेंगी? Anybody would like to share something? Ma'am, this is Madhu here. I can see that there. I want to share something. I don't know how relevant this question is. Usually, I'm not very comfortable with the topic of death. Okay. I'm not. Like some people, they don't, like even if in my neighbor, if somebody dies, I'm not comfortable going there.
Okay. I just avoid it. Okay, Ah. unless it is a very, very Yeah. close friend, or then I feel I need to go. Then it's and somebody I really am connected to. Then only I go. Otherwise, I really don't go. So my neighbor, I know that not neighbor, 2 lanes away, my friend's neighbor, and I don't know those people. Okay, so this the husband of that lady was traveling to Ujjain, Mahakaleshwar temple, Mhm. and I think in the bus he had a heart attack and died. Okay. Oh, Okay, when they got the news here, and the son is in 10th class, they Uh-huh. told the son that this is what happened. So he cried a lot, and he was like, "Why didn't you tell me? You should have called me at the tuition and this and that," because he was his tuition. So they thought, Oh, let him finish and come, that kind of thing. true. That boy, what he did? He took a Uh-huh. bicycle. He took his bicycle, and we all live in bungalows here. So it's only 1 or 2 floors, right? He Yeah. went to a nearby building, and Uh, unfortunately, the terrace was open. He went and jumped from there. oh, And of course, he had some injuries, and he died. Eventually, so yesterday it happened, 24 hours later, he died. How do we use, so it's very upsetting, and especially when it happens with children along. So how do we use gratitude here to अपने आप को मन को वो समाधान करने के लिए, how do we use gratitude here? Any answers? Any answers? Before I say anything, क्या लगता है आप लोगों को? देखिए साहब, जाना तो सब नहीं है. आज यदि मैं अच्छा सोचूं, अच्छा ना सोचूं, कोई कहता है I'm practical, I'm not practical. Whether I want to think about it, it will happen. यहाँ पर तो अमर पर रहने के लिए तो किसी के पास भी चॉइस नहीं है. Still, any answers? Anybody would like to say something here? And in reference, I just want to put it this way: just two or three houses away from me. Just I think last week or not even a week, a lady, she was an old lady, and the husband died during COVID, and she just died now. And I didn't have any such feeling that, okay, she's an old lady, she was unwell and she died. But with this situation, Right. it's like it's an unsettling situation. So how I just, in my thought, in my mind, it came, okay, how do I use gratitude to? Can anybody else answer it? Ma'am, Or we go ahead? मैं attempt करता हूँ. Yes. मैं attempt करूँ? हाँ सर, एक सेकंड जतिन सर को स्टार्ट करें, आप उसके बाद बोलिएगा. हाँ जतिन सर. Though the situation is difficult, but I think to accept the reality that it is how it has to be. True. वो जितना जल्दी हम accept कर पाए कि अब now wherever that child is and he is happy in his own place, that's how we can be grateful that although he went at a young age, but if we can accept that reality and with gratitude that let his soul rest in peace, we can find peace in within us also by saying that, actually. Very true. Maybe that Very is true. I just tried to say. Yes. Wonderful. That is what I think. Very good. Yes, Dev sir. The first thing is that we are afraid of death. So we have to see the reason why we are afraid. So मेरे को लगता है जो है कि it is a journey to the unknown. Death is a journey to the unknown. क्योंकि that वो world nobody knows. So why we don't look that it is a journey where you will meet ultimately the divine, ultimately the God. आपको भगवान से मिलन होगी या तो वहां पे जो भी होगा, that will be good for another thing. Likewise, we are in Hindus, so Hindus में क्या होता है कि rebirth एक होती है, तो हमारे जो आत्मा को एक नया शरीर मिलेगा, नया सब कुछ मिलेगा, एक नया being मिलेगा. We will be born as a new thing. तो अगर मैं इस thought को मैं लेता हूँ, तो I accept death very easily. मैं उस चीज को
मतलब घबराता नहीं हूँ, बट मैं उस चीज को फेमिलिटी में उसमें उसको रखता हूँ. दिस इज अ फिलोसॉफी. इसमें मैं Yeah. कोई साइंटिफिक मैं चीज नहीं बोल पाऊंगा, बट इट बराबर इज अ फिलोसॉफी. Yes. So we should embrace the death first thing, and now as a human being, हम क्या कर सकते हैं? We can detach from it. Detach मतलब detach from the grief. मतलब जो दुख पहुंच रहा है या तो मेरे इमोशंस जो हो रहे हैं, मैं उससे डिटैच करके अपने आप को हियर ऑल्सो बाय ग्रेटिट्यूड मैं ये बोल सकता हूँ थैंक यू. ये चीज मेरे साथ हमारे साथ या तो नहीं हुआ है, एटलीस्ट यू हैव गिवन मी द स्ट्रेंथ टू फेस द डिफिकल्टीज या फेस द लाइफ सिचुएशंस, एंड मैं उसको लेकर मैं आज जिंदा हूँ. एंड पैरेलली आई प्रे फॉर दैट फैमिली, क्योंकि हम तो मैम एज ए ह्यूमन बीइंग हम हमारे वी आर लिमिट, एक्चुअली हम लोग लिमिट में हैं. ओके, हम लोग रखते हैं कि वी आर लिमिटलेस, but still we have some limitations. So we can only pray to the God for the well-being of the family to give them the strength. और जो उस बच्चे के साथ या तो उसके फादर के साथ जो हुआ है, let the journey अच्छा एक जर्नी हो. They meet the God there and उनको अच्छा उनकी जो rest of the journey let it be smooth. This way I think हमको ऐसा रखना चाहिए. बिल्कुल सही सर. मधु जी, एक जो मैं सोचती हूँ, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनके फादर गुजर जाते हैं. क्या हर बच्चा साइकिल लेके सुसाइड करता है? नहीं करता है, राइट? अब आप देखिए, वॉट एवर हैपेंड इज वेरी सैड, उसमें कोई डाउट नहीं है. हम वी आर नोबडी टू एनालाइज ऑल्सो कि इसने सही कराया गलत किया, क्योंकि सी all said and done, there are certain things, or there would be many things in our life also where we don't have any complaint, we don't have any control. There are many things where we don't have control. So the things where we don't have any control, can we do something about it? No. So now, where is gratitude coming here? The gratitude here, it is saying that at least that boy, if what I can anticipate, if that boy had not done this, we know that this boy was very upset, and not everybody in the same situation would act and react in the same way. Now this boy, had he not done this, we don't know how difficult the life would have been. As we all know, शुरू में तो बहुत बुरा लगता है, but जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसके घर में स्पेशल बच्चे होते हैं, आपको बाहर वाले होके आपको बहुत दया आती है, पता है, वो अपने बच्चे को ऐसा रखते हैं. पर जिसको 24 घंटे देखना होता है, उनकी अप्रोच बहुत अलग होती है. Whether we like it or we don't like it, it's another story. But in the same way, so we don't know how this boy would have grown up. उसकी जर्नी कैसी होती. और at the end of the day, अभी हम लोग बात कर रहे थे, भगवान जो करता है वो हमारे अच्छे के लिए ही करता है. So maybe something good was there if this is what has happened. That is what I feel. Of course, with all the blessings to the family that they are able to, take this with a lot of strength. And So rightly said by Mr. Dev just now, okay, we have to accept it. Yes. And even उस पे थोड़ा आगे जाएंगे तो गीता में भी कहा है कि ये शरीर नाशवंत है, आत्मा मरती नहीं. तो सेकंड के ये we should feel that कि ये दोनों जन जो गए 2-3 दिन के गैप में गुजर गए, तो they will be together wherever they are. जहाँ हेवन में जाते हैं तो they will be together, and we can say to, जैसे gratitude करना है, thank you for everything, हमारा साथ यहीं तक था. Or it is as rightly said by you also, uncontrollable factor. We cannot change that, or we cannot control that. That is not our hand. So accept the reality, go ahead and think that they will be together, and as Atma to Amar hai, that will continue, और हमारा साथ यहीं तक था. Rightly बाकी whatever happens for good. अभी आप मुझे बताइए कि हम लोग जब 4A's पढ़ रहे थे,
Acceptance, Gratitude के adorable. there Yeah, was जी acceptance. जी. So acceptance किस चीज का है? यही तो है. When you look True. at the situations and you accept the things as they are, whenever there would be resistance, जहां पर भी resistance होता है वहां friction हो जाता है, right? मैम ये जो चीज है ना कि 94 का एक एक्सेप्टेंस, ये जितना जल्दी एक्सेप्टेंस होगा ना, पीस ऑफ माइंड उतना Mind जल्दी would be आता है. there. Perfect, sir. बिल्कुल सही. एक बिल्कुल सही. 94 का एग्जांपल देना चाहूंगा. I was interviewed for Amitabh Bachchan Corporation Limited, so called ABCL. Yeah. And उस टाइम it was in very much fame, बहुत आगे बढ़ रहा था. हाँ. And मेरा भी स्टडी बाकी था. I was in final C appearing for that. तो वहाँ मिस्टर एक जरीवाला थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ओवरऑल फाइनेंस मैनेजर. तो इंटरव्यू लिया एंड मुझे एस्ट्रोलॉजी एंगल से भी पूछा, तो वो समझ गए कि ये बंदा टिकेगा नहीं. और गलती से मेरा एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स वगैरह बोल गया. तो आई वॉज रिजेक्टेड बाय दैट कंपनी. अभी अमिताभ बच्चन की कंपनी में अगर आप काम करते हो एंड यू से टू आउटसाइड वर्ल्ड कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ हूं, तो आपकी इंप्रेशन जूनियर अमिताभ या सेकंड अमिताभ की तरह होगी और आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, राइट? एंड ओवर दैट टाइम आई वॉज रिजेक्टेड बाय देम. तो बहुत दुख हुआ. अरे यार, एकदम नजदीक था. मैंने ये गलती करी कि एस्ट्रोलॉजी एंगल भी बीच में घुसेड़ दिया और डिस्कशन किया. तो यार ये तो बहुत गलत हो गया, डिप्रेस हो गया. 2 साल बाद या 1 साल बाद पता चला ABCL अनलकीली बंद हो गई. तो एट दैट टाइम आई रियलाइज व्हाटएवर हैपेंस फॉर गुड. अगर मैं उस टाइम पे सिलेक्ट होता था तो शायद मुझे एग्जाम लीव मिलती नहीं मिलती, या मेरा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता, शो ऑफ में चला जाता और एग्जाम नहीं दे पाता. और ये 1 साल में बंद हो गई. तो जॉब और वापस अगेन आई हैव टू सर्च द जॉब. तो व्हाटएवर भगवान की मर्जी समझ के वी शुड एक्सेप्ट द थिंग. हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है. उस टाइम दुख होता है, लेकिन आगे चल के टाइम जैसे जाता है तो पता चलता है कि दैट वाज फॉर गुड. और भगवान वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है. बिल्कुल सही है. तो ये जो सीनियर्स लोगों के साथ या नॉलेजेबल लोगों के साथ उठ बैठ के ये सारा सीखा है, तो आज भी हम सीखते हैं. कहीं टेम्पल जाते हैं तो किसी का लेक्चर सुनते हैं तो ये सारी बातें आती है. एंड वी से यस, व्हाटएवर हैपन फॉर गुड. अब इतने बड़े संत अगर बोले कि भगवान की मर्जी, तो हम तो बच्चे हैं. तो वी शुड ऑलवेज से दैट थैंक यू गॉड, जो तूने किया अच्छे के लिए किया. एंड आई एम वेरी हैप्पी, नो कंप्लेंट्स. टू सम अप आज की इस मीटिंग को, लेट मी शेयर वन थिंग विद यू ऑल. एक आदमी को एक तावीज मिला. कुछ लोगों को पता भी होगा, ये मैंने पहले भी बताया. एक आदमी को एक तावीज मिला. वो तावीज सिर्फ 3 वरदान दे सकता था. वो आदमी बहुत खुश हुआ, अपने घर आया, डिवाइस से कहा कि देखो मुझे बहुत अच्छा तावीज मिला है, कोई भी 3 चीजें पर इनसे मांग सकते हैं. तो उन्हें तावीज से, उनका एक ही बेटा था और वो राजा की फौज में था. तो उन्होंने उस तावीज से कहा कि हम अपने बच्चे को वापस चाहते हैं, बच्चे से मिलना चाहते हैं. और अनफॉर्चुनेटली वो बंदा जो राजा के साथ था, वो राजा की सेना में था. जहां पर वो लड़ाई करने गया था तो वहां पर उसकी डेथ हो जाती है. अब इन्होंने तावीज से मांगा था, मुझे वो बच्चा चाहिए. अब उस तावीज ने वो बच्चे को उनके घर लाया, बड़ा बेटा ऑफ कोर्स. अब उसका बच्चे ने आवाज लगाई माँ को. माँ देख रही है कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ से आवाज आ रही है. तो उसको पता चला कि मेरे बच्चा है जो एक भूत बन गया है, स्पिरिट है जो उसके पास. तो कोई, क्योंकि उसके शरीर तो जला दिया था उन्होंने, और फिर उसकी माँ ने उससे मांगा है, माँ बाप ने मांगा है. तो अब उनको बहुत दुख हो रहा था कि हमने तो ये क्या कर दिया. अब दूसरा उन्होंने क्या करा, अब तो क्या कर सकते हैं. तो उन्होंने वापस उस तावीज से कहा कि ये जहां से हमारा बच्चा आया है, आप इसे वापस ले जाओ. मेरे बात का कहने का पर्पस ये है कि भगवान जो चाह रहा था, यदि उस पेरेंट्स की चाहत वहां आ गई तो उस बच्चा तो उस योनि में चलता रहता. तो जो भगवान करता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही करता है. ये बात अपन सब लोग शायद बचपन से सुनते चले आ रहे हैं. कभी एक्सेप्ट करते हैं, कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं.
So जतिन सर कुछ कहना चाह रहे थे आपका, you have raised your हाँ जी hand. हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं तो ये कहना चाह रहा था कि मैं थोड़ा ट्रैवल ही कर रहा था. हाँ जी I'm सर. really tired also. This is an out of context question actually. Okay. मेरी आवाज मैं जैसे the way you explain with a beautiful smile on your face. Okay. Thank you sir. So generally कहते हैं कि ना वो बच्चों को देखो और उनके साथ खेलो तो आप अपनी सारी टेंशन्स भूल जाते हो. The way you explain with a beautiful smile on your face makes me forget every worry also, and I just want to listen to you. Thank you Okay. sir. The one thing that I want to ask you is Yes. that how I can maintain such a beautiful smile on my face at every point of time, whether it is dawn, whether it is morning, whether it is night, happiness or sadness. Anything that you can share with me Yes. that helps you maintain such a smile on your face all the time. Yes. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए सर, आप ये मानते हैं कि अपन इसको फेक नहीं कर सकते? Absolutely मैम. मैं मतलब वही देख रहा हूँ ना मैम, वही देख रहा था मैं, वही चीज. अब देखिए सर, अपन जो मैं देख रही हूँ, मैं आपको कुछ टाइम पहले भी कहा होगा कि मैं एक हीलर हूँ. मैं बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज को करती हूँ, बट उन सबको करते करते मेरी जो जर्नी मुझे समझ में आती है कि आई एम ग्रैटिट्यूड करने के बाद मुझे उस चीज में क्या होता है, जब आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करते हैं, आप अपनी लाइफ में, आई थिंक ऑल दीज थिंग्स वुड कम टू यू. One would be your peace of mind, one would be that happiness. तो इस बहुत बार मैं लिख नहीं पाती हूँ, बट जैसे मैंने आज आपसे कहा ना, बहुत बार जब आप अपन बहुत सारा करते रहते ना, तो आपको लिखने की बहुत टाइम नहीं होगा, कोई बात नहीं, बट आप मन से थैंक यू इतनी सारी चीजों को कर जाओगे. अगेन जो यूनिवर्स है उसको पता है कि कहाँ से आ रही चीज. तो ये चीज अपन जब करते करते आगे बढ़ जाते हैं, this would be seen in us. So this is the only way. और दूसरा, आपने सिंसे पूछा ही है, तो एक मेरी अपन लोग ने अपनी डिजायर्स लिखी थी. तो मेरी डिजायर्स में मेरी एक डिजायर है, आई डोंट नो हाउ यू टेक इट, बट मेरी जो डिजायर है वो ये है कि मैं भगवान जी से, जो मेरी डिजायर है कि जो आपका जो काम है मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर पाऊं, और अपनी इस मानुष जन्म जितना भी बचा है, इस मानुष जन्म का सदुपयोग करूं. ये एक आस्क है मेरी. तो मुझे वहां से भी थोड़ा सा ये रियलाइज होता है कि थोड़ा सा वहां से भी फर्क पड़ता है. This is what I feel. I don't know how much I'm able to satisfy you, Jatin sir. जी एक आंसर ये भी है उनका, जतिन जी का, कि ये सारा चीज एक एक्सपीरियंस से आता है, एंड एक पर्टिकुलर एज से आता है, और एक कर्म से आता है. सो व्हेन these three got together, the stage we are at which you are on, ये आ ही जाएगा. एंड आपकी आस्क एक सब लोगों को हेल्प करने की है. तो ऊपर वाला बोलता है कि यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रमोट हर, उनको ताकत दो, उनको सारी हैप्पीनेस दो, ताकि वो बांट सके. यू आर नॉट आस्किंग फॉर योरसेल्फ, देयर इज नो सेल्फ इंटरेस्ट, देयर इज अ चैरिटी इंटरेस्ट. तो ये सारा अपने आप आ जाता है, and it will come by experience, age, and as I said, karma. So you are doing 3 combination, तो तीनों ट्रायंगल मिलके ये सारा चीज आप में समझ आता है. इसीलिए शायद सारे लोग आपका लेक्चर कोई मिस नहीं करना चाहते, प्लस दे अप्रिशिएट यू इन विद बॉटम ऑफ देयर हार्ट. कोई बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बट दे डेफिनेटली, जो इनके जो टोन से पता चलता है कि हाउ ग्रेटफुल ही इज टू अटेंड योर लेक्चर एंड टू सी यू. वो सब कुछ भूल जाते हैं. जैसे आपको देखा तो उनको लगा कि हाँ मुझे भगवान मिल गए, लाइक दैट. तो that's what my feeling and thinking is. I don't know to what extent I am right and to what extent I have satisfied Mr. Jatin. उमेश जी, इसमें मेरा क्या है, मेरा इसमें एक छोटा सा वो है, एक पॉइंट है कि क्या है कि ये तो आपने अच्छा कहा कि since she is thinking about helping people, so I am sure कि God is giving her strength also. But मैं कह रहा हूँ कि होता क्या है कि चलो मैं मानता हूँ कि मैं इतना अच्छा इंसान तो नहीं, बट मैं मानता हूँ कि मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ, बट अगर वो नहीं करते ना, अपना भला खुद ही नहीं करते हैं, तो मैं डिसअपॉइंट हो जाता हूँ, मैं सैड हो जाता हूँ.
बट ये क्या है कि जब मैं मैम को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शी आंसर्स एवरीथिंग वेरी पोलाइटली इन स्पाइट वी आस्क सो मेनी सिली क्वेश्चंस आल्सो. मेरे से कोई सिली क्वेश्चन पूछता है तो मुझे लगता है कि यार आई विल नॉट आंसर दैट डम गाय और डम पर्सन. ठीक है. तो मेरा दिस इज मी एक्चुअली, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सोचता हूँ इस तरह से. बट rather than judging the other person on the other side and replying with all the heart is what makes Ruchi ma'am different from every one of us, right? That is what I want to learn in the long run. Gratitude is something कि अगर आपके अंदर gratitude भर जाएगा तो आप ये सब चीजों को कर सकते हो. It is one thing कि ये gratitude तो बहुत ही important part है, वो तो है ही है. बट उसके साथ साथ मैं थोड़ा समझना चाह रहा था कि any skill or anything that Ruchi ma'am tells me and I can incorporate in my life. One more thing, sir. Yes, आपने बहुत सही मेरे को पता क्वेश्चन किया है. One more thing which I do, I accept the things and the people as they are. क्योंकि जहां मैंने अपने आप में बने भी बहुत, जब मैं इस चीज पे चल रही थी आगे, जहां रेजिस्टेंस आ जाता है ना सर, तो आवाज में भी खड़खड़ाहट जाती है, फ्रिक्शन आपकी बॉडी लैंग्वेज में, फ्रिक्शन आपकी आवाज में, आपके एक्सप्रेशंस में, सब दूर दिखता है. तो जस्ट एक्सेप्ट द पर्सन एंड द पीपल एज दे आर. जतिन जी, यही मैं कहना चाहता था कि ये एक्सपीरियंस से आएगा. जो आप कह रहे हो ना अभी कि आपको डम को आंसर नहीं दोगे, तो यू आर इन अ स्कूल इन अ फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड रुचि मिस इज द यूनिवर्सिटी. तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ मिस. तो यूनिवर्सिटी में कितने डिपार्टमेंट होते हैं? अकाउंट्स, फाइनेंस, बैंकिंग, लॉ, हिस्ट्री, एचआर, कितने सारे होते हैं. तो आप जो जतिन जी हो, जो अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, तो जैसे यू विल क्रॉस दैट 10th स्टैंडर्ड लेवल या एक पर्टिकुलर एज, आप में भी वो ठहराव आ जाएगा. आप और वो एक्सपीरियंस से आएगा, चाहे आप ठोकर खाओ चाहे अच्छा मिले. तो ये दोनों को कंबाइन करके आप भी एक दिन इस लेवल पे पहुंचोगे. बट इट मे टेक सम टाइम, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट. नहीं, बट लाइक व्हाट आई फील सर, नो मेरे सर एक ये चीज जो मुझे बहुत मदद करती है ना, व्हाट आई फील, सिंस आपने पूछा तो मेरा भी ध्यान उस तरफ गया कि यस, दिस इज वन थिंग व्हिच आई हैव ऑलवेज टोल्ड माय सेल्फ कि जैसे मैं, आपको याद है फर्स्ट वाला जब आपके साथ जब मैं शेयर करी थी फर्स्ट टाइम बुक, तो मैंने ये एग्जांपल दिया था कि हम गधे को घोड़ा बनाना चाहते हैं और सारी एनर्जी हम उसमें झोंक देते हैं. आपको भी पता है कि वो गधा घोड़ा कभी नहीं बन सकता. तो आई थिंक कि जैसे मुझे ये चीज भी काफी मदद करती है कि, क्योंकि फिर क्या होता है वहां मुझे उसमें जजमेंट नहीं आता ऐसा. वंडरफुल शोभिता जी. वैसे हूं नहीं ऐसा. I was just giving an example. Yeah. I got it, sir. See, हम भी example से ही समझा रहे हैं. I'm not blaming you, sir. No. Yes. I answer every. जतिन जी, आपके लिए मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है. तो मैं जब आईटी में काम करती थी, कब आई एम टॉकिंग आउट इन 10-15 years बैक. तो एक बार मैं आई यूज्ड टू डू असेसमेंट, CMMI, आई डोंट नो इफ यू नो, इट्स लाइक ऑडिटिंग प्रोसेस का ऑडिटिंग करते थे. तो मेरे मैनेजर ने आके बोला, कुछ तो बोला. मैंने कहा ये तो इतना सिंपल है, सबको कर लेना चाहिए. तो उसने एक ही स्टेटमेंट बोला, मधु, इट इज सिंपल फॉर यू, इट इज नॉट सिंपल फॉर देम. तो मैं वो बात याद रखती हूँ. इट माइट बी सिंपल फॉर मी एंड वी शुड बी ग्रेटफुल. I think from this grateful, it should be grateful. It is simple for us, but it is not simple for them. Yes, to sum it up, no, मेरे को एक आप लोगों से एक बात मैं आपको बताऊं. मैं टीचर के अलावा एक LD रेमेडियल एजुकेटर हूँ. LD रेमेडियल एजुकेटर क्या होते हैं? वो बच्चे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनको रीडिंग करना नहीं आता है, तो हम उसको बोलते हैं कि डम है, इसको LD है, इसको ये नहीं आता, लोग बोलते हैं. अब उस बच्चे को रीडिंग करना नहीं आता तो हमने उसको LD बना दिया. अब वो बच्चा कंप्यूटर बहुत अच्छा बना कर लेता है, कंप्यूटर में मैं LD हूँ, तो मैं उसके बराबर ही हो गई ना भाई. है ना साहब? I like it. ये वो वाली चीज है. सही है. चलो, wonderful session. I really enjoyed. Thank you. Thank you. Yes, thank you so much. So grateful to you. Thank you so much. Thank you, miss. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much.
Thank you so much. Thank you, ma'am. Have a great, blissful life, all of you. Thank you.